Thank you. Good evening, students. We are back with the revisionary virtual classes for CA Inter FM. In our previous revisionary class, we completed leverage very thoroughly. We tried to cover all the problems in your RTP, and I believe you are through with that chapter. Now, today's revisionary lecture would be specifically for investment decision and dividend decision. So it is a combination of two chapters and both are equally important. So let's begin first with investment decision because it's quite a lengthy chapter. Now, what was the ultimate objective or the learning outcome of this chapter? If you had attended my regular LVCs, I've covered this chapter and I explained you that the ultimate objective or the learning outcome of investment decision is just to answer a single question, just to make a decision on a single question, whether to invest in the project or not. बस पूरा चैप्टर इसी क्वेश्चन में घूमता रहता है. Whether the company, whether the business organization shall invest in the project or not. Now, project, the word project or the term project has a very broader meaning. Project may include starting up a new business. Project may include launching a new product. Project may include replacement of a machine. Project may include selling of a scrap. Earlier, we used to sell a scrap, but now we are refurbishing the scrap. Whether we should refurbish the scrap or we should continue selling the scrap to the scrap vendor. That is also a project. So, project in this chapter has a very broad meaning. ठीक है. इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा था? कहना इसे आपने डिफरेंट कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स पढ़ी थी. And in your syllabus, you have 7 different types of capital budgeting techniques. What was the job of this budgeting techniques? उनका आंसर यही है. It was helping you in decision making कि हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें कि नहीं. Different techniques has different ways of solving and based on that they provide their own viewpoint. ठीक है. उसमें फर्स्ट बजटिंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक was payback period. Let me just first write it down the names of all the techniques and then we will quickly discuss all the techniques one by one. ठीक है. I hope you are comfortable with this process. So first was payback period. उसके बाद था डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पीबीपी. पीबीपी इज शॉर्ट terminology of payback period. Then ARR, accounting rate of return आपने पढ़ा था. Very important NPV technique. Very important and very practical technique. Then we studied IRR. उसके बाद हमने पढ़ा था profitability index. And last but not the least, modified IRR. These were the different techniques that are different methods of investment decision that were covered. ठीक है. Any doubt students? इसमें कोई doubt है? My screen is not visible. Okay. Sorry. Now is it visible? Screen okay. Okay. अब दिख रही है screen? Okay.
So investment decision was all about answering a single question, whether the company should invest in the project or not. इस chapter में broadly we had learned about different capital budgeting techniques. Yes or no? Correct. What were those different capital budgeting techniques? Payback period, discounted payback period, ARR, NPV, profitability index, IRR, and modified IRR. ठीक है? So now let's quickly discuss each of the techniques one by one so that it gets completely revised up. Your concepts get easily and quickly brushed up. Payback period. What do you understand by the word payback period? Payback period में क्या होता था? It is the time period within which your original investment gets recovered. Means आप प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्ट करोगे ना, वो कितने साल में वापस रिकवर प्रोजेक्ट करके दे रही है. That is payback period. Are you following? Within how much time your original investment gets repaid back or gets recovered back. ठीक है? So इसमें, so can I say it is time period within which original investment gets recovered. इसमें further there were two scenarios. When cash flows were constant, so if cash flows were constant, our simple formula to calculate payback period was nothing but original investment divided by n. Yes or no? If the cash flows were constant, and if the cash inflows were not constant, then we used to prepare the table. टेबल में क्या क्या होता था? उसमें ईयर होता था, कैश इनफ्लो होता था, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेबल क्यूम्युलेटिव कैश इनफ्लोस. क्यूम्युलेटिव कैश इनफ्लोस. ठीक है? एंड बेस्ड ऑन दैट, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपोलेशन, हम फिर पेबैक पीरियड ढूंढते थे. Are you following, students? Any queries? I'm not taking any illustration for each of the technique one by one because we have a very short time and we have to cover many things. So I'm just principally explaining you the concept कि payback period का मतलब क्या और हम कैसे solve कर देते हैं. ठीक है? Any doubts, students, in payback period? Any doubts? Any concerns? Clear? Okay. Let's move to second, discounted payback period. अब ना पेबैक पीरियड की कुछ खामियां थी. देयर वर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ पेबैक पीरियड. वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज दैट इट डज नॉट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा था वे बैक पेबैक पीरियड. सो to resolve that disadvantage or to resolve that issue, we have the concept of discounted payback period. ठीक है? So discounted payback period हम कैसे solve करते थे? Again, year, cash inflows, and then we used to take present value of cash inflows. Present value of cash inflows is nothing but discounting of your cash inflows. फिर हम cumulative cash inflows का table बनाते थे, but those cash inflows were present value. Are you following? And then by interpolation, we used to solve discounted payback period. Okay? So the difference between payback period and discounted payback period is very simple. PBP, just PBP, ignores time value of money का concept. Means 5 साल बाद जो 1 लाख मिलने वाला है प्रोजेक्ट से, it is worth 1 lakh today. This is what payback period assumed. But can I say 5 साल बाद जो 1 लाख मिलने वाला है, आज की वर्थ उसकी कम होगी. Because 1 lakh you are receiving in the future, so it is worth less today. So discounted payback period resolved the problem of payback period. Any doubts, any concerns? आगे बढ़े.
बोलो. And you have learned this, so you would be easily able to recollect or grasp in your minds. Third was ARR, accounting rate of return. Now, the difference between accounting profit and financial management or financial profit, I would say there is one thing. Accounting profit focuses on sales, means revenue and expenses, whereas financial management specifically focuses on cash flows. ठीक है. So accounting rate of return means return generated as far as accounting treatment is concerned. Accounts, books of accounts में जो profit होता, जो return project देता, that is called accounting rate of return. So when I say it is nothing but average NPAT divided by original investment. This was how we used to calculate ARR. ठीक है, average NPAT. Here we will not take cash flows, we will take profit, net profit. Why? Because we are calculating return from accounting perspective, from accounting policies, from accounting principles perspective. ठीक है. बाकी इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा फोकस कैश फ्लोस पे ज्यादा है, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट considers cash flow as a significant variable compared to profit. Profit कितना जनरेट हो रहा है that is important, but cash flows कितना जनरेट हो रहा है that is more important. So financial management and accounting principles, financial reporting में इतना ही फर्क है. Financial management focuses on cash flows as well. ठीक है. So opportunity cost, अपॉर्चुनिटी सेविंग्स, ये सब कंसिडर होता है एफएम में, जो कि अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं होता. ठीक है. दिस वाज एआरआर. फोर्थ very important technique, NPV, net present value technique. Under this technique we used to calculate present value of cash inflows. उसमें से we used to subtract present value of cash outflows. If NPV is positive, the decision making rule was accept the project. But if NPV is negative, decision making rule or the decision making criteria of NPV was, if it is negative, reject the project. Followed? This was NPV. Very important. How to calculate PVCI? उसका एक पूरा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट था हमारा, starting from sales ending till cash flows after tax. So let's just quickly revise that. Sales, ठीक है, less COGS gives you GP, less all operating expenses but excluding depreciation. So if we subtract of all the expenses, means all the cash expenses, excluding depreciation means cash operating expenses, you would get net profit before depreciation and tax, जिसको हम NPBDT बोलते थे. अंडरस्टूड. इसमें से we used to subtract depreciation, तो क्या मिलता था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स. क्या मिलता था? NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ऐड करते थे क्या करते थे? डेप्रिसिएशन. अगेन वी यूज टू ऐड बैक द डेप्रिसिएशन और हमें मिलता था कैश फ्लोज, कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CFAT. Now what was the logic of deducting the depreciation first and then adding back?
तभी कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता था कि सर आप पहले माइनस कर रहे हो डेप्रिसिएशन, फिर ऐड कर रहे हो, तो सर फर्क क्या, आप माइनस करके ऐड ही करना है तो सर लेते क्यों डेप्रिसिएशन? तो व्हाट वाज द लॉजिक फॉर दैट? Yeah, for calculation of taxes. See, depreciation itself is a non-cash expense. It is not a cash item. So उसका स्थान इस स्टेटमेंट पे नहीं होना चाहिए. I agree with you. But can I say depreciation है तो tax savings है, because it is a tax deductible expense. Yes or no? It will help in saving taxes for us. So that's why just for the calculation of this tax correctly, ये टैक्स का अमाउंट हम करेक्टली एस्टिमेट कर सके, इसलिए हमने पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया, बिकॉज इट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस. अब एक बार ये टैक्स सही से हमने कैलकुलेट कर दिया, फिर हमें डेप्रिसिएशन की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. सो वी added back the depreciation. So this is how we used to calculate cash inflows after tax. Followed? And once you calculate present value, so this is cash inflows after tax. इसके साथ इसके बाद आप क्या करते थे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते थे एट वॉट एवर रेट वुड बी योर डिस्काउंटिंग रेट. Yes or no? And number of years. And then we used to get present value of cash inflows. Once you get present value of cash inflows, we subtract present value of cash outflows, and at the end we see whether NPV is coming positive or negative. Positive है तो decision criteria is accept the project, negative है तो reject the project. इसके बाद what was a discounting rate? So I explained you during regular classes that your discounting rate is primarily your required rate of return from the project. मान लो आप जो भी नया प्रोजेक्ट ले रहे हो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट रेट क्या है, दैट शुड बी योर डिस्काउंटिंग रेट. सी कैश फ्लोज तो कर दिया, बट कैन आई से इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि कौन से रेट से वो कैश फ्लोज को डिस्काउंट करे. Yes or no? So it is actually your required rate or desired rate. आपको प्रोजेक्ट से कितना कमाने की इच्छा है, based on your requirement, that should be your discounting rate. But can I say, as far as academics is concerned, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी कि मेरे लिए एक प्रोजेक्ट से 12% इज सफिशियंट, बट वही प्रोजेक्ट से आपके लिए इट मे नॉट बी सफिशियंट. So at what rate we should discount as far as academics is concerned? So उसके लिए we need a uniform rate. But practically it is actually your required or desired rate. If that is not available, then check for the industry rate. अगर वही प्रोजेक्ट, वही सिमिलर प्रोजेक्ट कोई दूसरी कंपनी करती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट रेट और उसका क्या डिस्काउंटिंग रेट है, यूज दैट रेट. दैट इज योर इंडस्ट्री रेट. बट अगेन it depends from company to company. It is very subjective and we need uniformity as far as academics and examination is concerned. So last but not the least, we use WACC, overall cost of capital. Hey, any layman, it is very simple logic. मेरा जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड्स, कॉस्ट ऑफ रेजिंग द कैपिटल, मैंने जो फंड्स रेज किया है वो मैंने प्रोजेक्ट में लगाया, तो एटलीस्ट आई नीड टू रिकवर माई कॉस्ट. उतना तो मिनिमम चाहिए ही मुझे प्रोजेक्ट से, और एल्स आई एम नॉट अ गुड बिजनेसमैन if my required rate is less than my cost, then I am not doing business, I am not doing a healthy business. मैं नुकसान ही करवा रहा हूँ. So understood? So in that case, our discounting rate becomes WACC. At least you recover your cost of raising the capital that you have invested for the project. Following? जो प्रोजेक्ट में पैसा लगा है वो कहीं से रेस किया है तो उसका कॉस्ट तो पहले निकालो मिनिमम. सो दैट शुड बी योर डिस्काउंटिंग रेट. सो इन आर 90% or I would say 99% of the question we use WACC as discounting rate. Followed? Any queries? Then there were certain adjustments for specific line items. Certain adjustments for specific line items. जैसे
just by investing in fixed assets of the project will not start the project. मान लो आप नया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो जस्ट मशीनरी लेने से, फैक्ट्री की जगह लेने से, फैक्ट्री बिल्डिंग लगा देने से your manufacturing business will not start. Can I say you will need additional capital called working capital for smooth functioning of business? So first special adjustment was working capital, introduction of working capital. At year zero, since at the start of the business, you have to introduce working capital, आपको लगाना पड़ेगा पैसा, it is an outflow. But once the project is ended, can I say working capital will be released back to you? A working capital is what? Amount that stays in your current asset and current liability. So can I say at the end of the प्रोजेक्ट आपकी सारी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो गई होगी, आपको जिस जिससे पैसे लेने थे उससे मिल गए होंगे. सो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट योर वर्किंग कैपिटल गेट्स रिलीज टू यू. सो एट द एंड ऑफ लाइफ इट इज एन इनफ्लो. ठीक है. सो दिस वाज what we used to do for working capital. Then very important, sunk cost. Sunk cost is ignored in our capital budgeting decision. Why it is called, why it is ignored in our capital budgeting decision? Can I say sunk cost is those cost, ध्यान से सुनना, आप प्रोजेक्ट लो या ना लो, ये कॉस्ट इनकर हो चुका है, ये डूब गए आपके पैसे. You will not be able to recover whether you take the project, तो भी नहीं रिकवर कर पाओगे, प्रोजेक्ट नहीं भी लेते हो तो भी आप रिकवर नहीं कर पाओगे. सो इट इज irrelevant for our decision making. Are you following? Sunk cost. Well, any doubts, any queries still here, students? Yes, working capital can't be introduced every year, but question may specify sometimes key in expansion of the project. Let's say for example in expansion for your project, पहले एक मशीन था, अब आप प्रोडक्शन कैपेसिटी उस प्रोजेक्ट में बढ़ाना चाहते हो थर्ड ईयर के एंड में, तो थर्ड ईयर के एंड में थोड़ा वर्किंग कैपिटल और लगेगा, बट दैट क्वेश्चन विल स्पेसिफाई. So whenever question specifies that working capital is introduced in so and so year, it is an outflow for you. But at the end of life, it becomes an inflow because तब तो release हो ही जाएगा. Are you following? A net effect of working capital will not be zero. Why? Because this is year zero. आज इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो इसका प्रेजेंट वैल्यू विल बी वन ओनली. लेट्स से 1 लाख यू इंट्रोड्यूस टुडे, सो आज प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो 1 लाख ही आएगा. बट दिस 1 लाख लेट्स से इट गेट्स रिलीज बैक एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, सो कहने इसको तो डिस्काउंट करना पड़ेगा with the discounting factor at X percentage fifth year. So net effect won't be zero. In absolute terms, in absolute figures, it is zero. But in present value terms, it is not zero. Followed? क्योंकि फिफ्थ ईयर के एंड में तो हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा उसको. ठीक है. So this was all about working capital, sunk cost. Then we also had some capital gains as well. And this capital gains was calculated based on the concept of block of assets. If you remember, block of assets concept आपको taxation में भी आया है. So based on that, similarly हम यहाँ पे भी उसी तरह जो टैक्सेशन में आपने ब्लॉक ऑफ असेट्स का टैक्सेशन सीखा है ना, उसी तरह यहाँ पे भी अप्लाई होगा. ठीक है. So third certain adjustment was about capital gains. Last but not the least, scrap, salvage value from the machine or from the project. It is an inflow at the end of the life. Then there are specific adjustments which are question specific. तो question to question हमें देखना पड़ेगा, but these are some general adjustments that you would frequently see. But there are certain specific adjustments as well which are question specific. So जब वो question करेंगे और when you study that question, you will face those adjustments. ठीक है.
So this was all about एनपीवी टेक्निक. एनपीवी से फिफ्थ टेक्निक बनी थी पीआई इंडेक्स, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स. इट इज नथिंग बट पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ. The variables of NPV technique और the variables of PI technique both are same. बस एक में PVCI में से PVCO माइनस करना है, एक में PVCI डिवाइड बाय PVCO करना है. And what was the decision making rule of PI? Can I say if PI is greater than 1, accept the project. And if PI is less than 1, reject the project. ठीक है, यही था. वर्किंग कैपिटल डज नॉट गेट टैक्स्ड. वर्किंग कैपिटल आप इनकम स्टेटमेंट में ऐड नहीं कर सकते हो. वर्किंग कैपिटल मीन्स व्हाट? जस्ट थिंक इट इज कंपोनेंट्स ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. अच्छा सर, करंट असेट के कंपोनेंट में क्या आएगा? सर डेटर्स आएगा. ये तो कहना है से डेटर से जो सेल हुआ है वो तो आ गया इनकम स्टेटमेंट में. दिस इज जस्ट द रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल. लेट से आपने किसी को लोन दिया, फिर वो लोन वापस आ रहा है. दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड. फॉलोइंग, that is the release of working capital. So you don't have to add it in that income statement. हाँ, अलग से फिर इनफ्लो में ऐड करना है. आर यू फॉलोड? बिकॉज डेटर्स है, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है तो सेल्स है, डेटर्स है तो सेल्स है, तो इफेक्ट ऑफ दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द इनकम स्टेटमेंट. So working capital is never taxed. Followed? So let's again, I hope it is clear. Yeah. Thank you. So yes, PI is greater than 1, except PI is less than 1, reject. Now what? How to interpret PI? Let's say my profitability index comes to 1.5. So what does this 1.5 mean? This 1.5 means on investment of 1 rupee, my project is able to generate 1.5 rupees of inflows. On investment of 1 rupee means आउटफ्लो, 1 रुपए का आउटफ्लो, 1.5 रुपीज ऑफ इनफ्लो इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स जनरेट करके दे रहा है. दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. प्रोजेक्ट में 1 रुपए लगाने से वापस कितना मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो? इट इज 1.5 इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स. फॉलोड? इन एब्सोल्यूट टर्म्स इट वुड बी हायर, बट इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स 1.5. सो ये तो फायदे का, यू शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. फॉलोड? एनी डाउट्स? Any questions? Any concerns? Sixth, IRR technique. IRR technique. What did the IRR technique explain you? आपको IRR टेक्निक से क्या समझ आता है? कहना से IRR टेक्निक इज नथिंग बट द डिस्काउंटिंग रेट. सी, नाम में ही है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. सो इट इज नथिंग बट द डिस्काउंटिंग रेट. सो IRR टेक्निक में हमें ढूंढना क्या है? डिस्काउंटिंग रेट where your NPV is 0. मेरा NPV 0 कौन से डिस्काउंटिंग रेट पे आएगा? दिस इज व्हाट IRR इज. NPV 0 कहना है इसे. NPV 0 कब होगा? when PVCI is equal to PVCO, तभी 0 होगा. Yes or no? Are you following? So IRR is that discounting rate where your NPV is 0. Or in other words, when your PVCI is equal to PVCO. Are you following? Everyone followed? So how did we calculate IRR? So our method, our approach to solve IRR was using trial and error method. Yes or no? हम ट्रायल 1 लेते थे, लेट्स से 10%. हम 10% पे चेक करते थे. लेट्स से एनपीवी एट 10% comes to positive 1500. So this cannot be IRR because मुझे 0 चाहिए एनपीवी. हाँ, if
at 10% NPV is 0, then your IRR is 10%. But since in my present example, my present illustration, NPV is positive 1500, so IRR is not 10%. So trial 2 was taking another discounting rate which was higher than 10%. Let's say we take at 15%. And let's say now my NPV comes to minus 700. So can I say my NPV which I want to be 0 will lie somewhere between 10 and 15%? Yes or no? अब ये तो पक्का हो गया कि 10 and 15 के बीच है, ठीक है, because 0 lies between positive 500 and negative 700. Yes or no? फिर हम क्या करते थे, फिर we used to apply the concept of interpolation. इंटरपोलेशन टेक्निक क्या बोलती थी, इफ आई इंक्रीज माई रेट फ्रॉम 10 to 15%, मीन्स कहने से मैंने रेट 10 से 15% मीन्स 5% से बढ़ाया, तो मेरा एनपीवी कितने से फॉल हुआ, कहने से 1500 से 0 हुआ, उससे ज्यादा और 700 गिर गया, मीन्स कहने से इट फेल बाय 2200 रुपीज. यस और नो? पॉजिटिव 1500 टू 0 टाइम लाइन एंड 0 से और माइनस 700, तो 2200 पॉइंट से नीचे गिरा बाय इंक्रीजिंग द रेट of 5%. But I just want my NPV to decrease or to fall by 1500. मुझे इतना ही चाहिए कि मेरा एनपीवी 1500 से 0 हो, मीन्स कहने से 1500 पॉइंट से ही गिरे. So how much rate I need to increase? This is what interpolation means. और in simple layman 9th class student के माइंड में समझाना हो तो this is nothing but your cross multiplication. So can I say it is nothing but 1500 into 5 divided by 2200. कितना आ रहा है? 1500 into 5 divided by 2200. So I need to increase my rate by 3.41%. So can I say my IRR will be 10 plus 3.41%, which comes to 13.41%. So at discounting rate of 13.41%, आपका NPV 0 आ जाएगा. This was how we calculated IRR using trial and error method, and under that interpolation technique. Now from this entire logic, IRR की कुछ फॉर्मूला भी बनती है. If some students are not able to understand these logics, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाई है. What is the formula? Formula is nothing but lower rate plus NPV at lower rate divided by NPV at lower rate minus NPV at higher rate whole multiply by higher rate minus lower rate. This was the formula for NPV technique. Sorry, IRR technique. This formula looks quite complex, but उसका लॉजिक ये पूरा इंटरपोलेशन ही है और कुछ नहीं है. What is the lower rate in my present illustration? Can I say from 10 and 15%? Lower rate is 10. So let's check the formula. 10 plus NPV at lower rate. Can I say my NPV at 10% came to 1500? Yes or no? The whole divided by NPV at lower rate is 1500 minus. Now what was my NPV at higher rate? Higher rate was 15%. Can I say 15% पे मेरा NPV came negative 700. तो minus 700. Are you following? Into higher rate was 15 and lower rate was 10. बस ये ब्रैकेट को सॉल्व करो, 10 प्लस ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 3.41 आएगा. Hence your answer is 13.41%.
फॉलोड. सो जिसको ये इंटरपोलेशन का लॉजिक और आईआरआर का लॉजिक नहीं समझता है, they can apply this formula as well. But I would always support the logic more rather than memorizing the formula. If you can understand, if you can recollect the logic, then formula तो अपने आप से भी create कर सकते हो. ठीक है. So this was all about IRR technique. Last but not the least, modified IRR. Modified IRR. See, IRR technique had one assumption that the intermediate cash inflows मीन्स प्रोजेक्ट एवरी ईयर जो कैश इनफ्लो जनरेट करता है ना, लेट्स से 100 100 100 100 100 फॉर द टाइम बीइंग, लेट्स से 100. IRR assume that these intermediate cash flows, if first of all, whatever intermediate cash flows are earned by the company, कैनेस वो कंपनी अपने जेब में तो नहीं रखेगी. They will not keep the funds idle with itself. They will reinvest somewhere, कोई और प्रोजेक्ट में या कोई बेहतर इन्वेस्टमेंट में. Yes or no? So, in my example, can I say company will not keep this 100 idle in its bank account? या तिजोरी में ये छुपा के नहीं रखेगी. Company will reinvest this intermediate cash flows, all the intermediate cash flows, somewhere else. Yes or no? And IRR, and can I say वो reinvestment से company would earn some percentage. Yes or no? So IRR technique assume that all the intermediate cash inflows had to be reinvested at IRR rate only. Means in my present example, 13.41 is my IRR rate. So IRR assume कि जितने भी cash inflows है intermediate, वो reinvest कितने परसेंट पे होता है? 13.41% only, which is illogical. Are you following? Because this 13.41 is the return that project is generating for you. So कहीं और इन्वेस्ट करोगे, कहने से उसके फीचर्स ये प्रोजेक्ट जैसे तो नहीं हो गया. मैंने मान लो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रही है, दिस प्रोजेक्ट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो यू वुड नॉट गेट 13.41, which is illogical assumption. Understood? So modified IRR came into the picture. Modified IRR क्या बोलता है? IRR तेरे में एक डिसएडवांटेज है. Your disadvantage is that you are assuming that reinvestment rate is at IRR only, which is wrong. Reinvestment rate should be the company's desired rate or the discounting rate. Followed? So modified IRR says that all the intermediate cash inflows has to be reinvested somewhere else in some another project at your WACC or at your required rate of return. Followed? So this is the difference between IRR and modified IRR. And I tried to give a comprehensive illustration in my regular classes. So if some of the students has missed my regular classes, so they can just see the video on modified IRR and they are all the doubts or all the concept clarity student will get. Okay? So these were 7 different techniques under capital budgeting that you all have learned and you all are now very well versed because आपकी exam next month में ही है. Followed? So you are very well versed with these techniques. इसके अलावा there were certain more points under capital budgeting. Can anyone try to tell me कि इसके अलावा कैपिटल बजटिंग में क्या होता था? कैन एनीवन टेल मी इसके अलावा इस चैप्टर में क्या कौन से कॉन्सेप्ट्स और कवर है? Opportunity cost, yeah, this I explained you कि in my accounting rate of return कि financial management considers
कैश फ्लो, उसमें हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, कई और सेविंग्स होती है कोई खर्चे में, उसको भी हम इंपॉर्टेंस देते हैं, विच इज इग्नोर्ड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और विच इज इग्नोर्ड इन योर अकाउंटिंग प्रिंसिपल. बट मेन, आई वॉज एक्सपेक्टिंग one more thing. I was expecting कि NPV and IRR generates conflicting results. Let's say there are two projects, project A and B. What do you mean by conflicting results? Let's say NPV of A is positive 10,000 and NPV of B is positive 12,000. IRR of A is 20%, whereas IRR of B is 18%. So as per the decision making rule of NPV, if the projects are mutually exclusive, means ये दोनों प्रोजेक्ट में से एक को ही सिलेक्ट करना है, तो कह रहे हैं as per NPV you should go for project B. Yes or no? As per NPV you should go for project B, but as per IRR you should go for project A. So कहने से conflicting results दे रहे हैं दो टेक्निक. हाँ, capital rationing as well. Yes, correct. Capital rationing, yes. Yes, that is also there. But before that, conflicting results, scenarios when NPV and IRR will generate conflicting results. तो ऐसे कौन से सिचुएशन में होता था? नंबर वन, when there was size disparity in the project. Size disparity in projects. Let's say project A is of 1 lakh rupees. Means if you want to start or go with project A, आपको 1 लाख का इन्वेस्ट करना है. Whereas project B requires investment of 25 lakhs. So can I say there is size disparity between two projects? तो ऐसे सिनेरियो में NPV will give some another results and IRR will give some another results. Followed? So this was number one, when there is size disparity. Second, when there is timing difference in the generation of cash inflows. Timing difference in the generation of cash inflows. Again, two project A and B, both mutually exclusive. Either you have to select A or B. Mutually exclusive means majority of the cash inflow in project A is during initial years. Something like this. Whereas majority of the cash inflows in project B is generated during later years. So ऐसा कोई सिनेरियो है between two projects, then again they will give conflicting results. So number one, when there is size disparity, दोनों प्रोजेक्ट की साइज में डिफरेंस कुछ ज्यादा है. One is small size project, one is extra large size project. ट्रिपल एक्सएल है और एक एस साइज है. Second, when there is timing difference in the generation of cash inflows. एक प्रोजेक्ट कैश इनफ्लोस इनिशियल ईयर्स में ही जनरेट करके दे रहा है, वेरेस दूसरा प्रोजेक्ट का कैश इनफ्लोस लेटर ईयर्स ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ में जनरेट करके दे रहा है. तो ऐसा कुछ सिनेरियो है तो अगेन योर एनपीवी एंड आईआरआर विल गिव डिफरेंट आंसर्स और कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, unequal life of the project. Project A, let's say 3 years. Project B, let's say 9 years. So ऐसा कोई सिनेरियो है प्रोजेक्ट के बीच, then again they will give conflicting results. Students, are you following? So I'm just explaining you or giving you the quick insights on different scenarios
जब जा जा एनपीवी और आईआरआर में कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स आएगा. बट एट द एंड इफ वी हैव टू सिलेक्ट वन प्रोजेक्ट we will go based on the NPV technique, ठीक है, because it is more practical and logical. Yeah, NPV will be considered. But I am just explaining the scenarios. कौन से situation में अलग आ सकता है, ठीक है? So these are the three scenarios when IRR and NPV will give conflicting results. Now, the problem of unequal life. See, when the life of the project is unequal, prima facie both the projects cannot be compared. ये मैं 5 साल के बच्चे का दिमाग आई कैन नॉट कंपेयर विद अ 60-year-old मैन, उसके दिमाग के साथ कंपेयर नहीं कर सकता. सो लाइकवाइज प्रोजेक्ट ए का लाइफ इज 3 years विच इज अ किड, whereas project B का life is 9 years which is like an old man. It is prima facie non-comparable. Are you following? It is non-comparable. So let's say दोनों का project positive आया and let's say NPV of project A is 1 lakh, NPV of project B is 1,25,000. So you cannot outrightly decide, sir, NPV of B is higher, go for project B. No. सर क्यों ऐसा नहीं? बिकॉज इट इज नॉट कंपेरेबल ओनली. एक प्रोजेक्ट 3 साल का है, दूसरा प्रोजेक्ट 9 years का है. सो प्राइमा फेसिली देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. यू कैन नॉट कंपेयर आउटराइटली. सो सर उसके ऐसे सिचुएशन में क्या करने का? सो माय आंसर वुड बी इन दैट केस यू हैव टू मेक इट कंपेरेबल. यू हैव टू मेक इट कंपेरेबल. हाउ टू मेक इट कंपेरेबल? कैन आई सी ये प्रोजेक्ट ए की लाइफ को प्रोजेक्ट बी के लाइफ से इक्वल करना है, इक्वल करना है तो टेक प्रोजेक्ट ए 3 times. मीन्स प्रोजेक्ट ए विल स्टार्ट इन ईयर 1, 2, 3. 3 साल में प्रोजेक्ट ए खत्म हो जाएगा तो वापस प्रोजेक्ट ए लो इन ईयर 4, 5 एंड 6. अच्छा सर 6th year में वापस खत्म हो जाएगा तो वापस टेक वन मोर टाइम 7, 8 एंड 9. एंड नाउ your life of project A is equal to life of project B, and now it is comparable. So when the life of the project is not same, outrightly you cannot compare, or outrightly you cannot make decision कि sir जिसका NPV higher we will select that. No, first you have to make them comparable. Means दोनों की life same लानी पड़ेगी. So can I see in this case you have to take project A 3 times, तब जाके वो प्रोजेक्ट बी के साथ इक्वल हो जाएगा. सो दिस वे, दिस मेथड, दिस टेक्निक टू मेक द प्रोजेक्ट कंपेरेबल इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट चेन मेथड. आई होप यू आर एबल टू रिकलेक्ट द कॉन्सेप्ट्स. रिप्लेसमेंट चेन मेथड. आर यू फॉलोइंग? अच्छा मान लो इसी सिचुएशन में, मान लो लेट से प्रोजेक्ट ए इज 3 years एंड प्रोजेक्ट बी इज 90 years. हाउ टू मेक इट कंपेरेबल? बताओ बताओ, हाउ टू मेक इट कंपेरेबल? एनी आंसर्स? सो सर वन वे इज टेकिंग प्रोजेक्ट ए 30 times तो भी इक्वल हो जाएगा. बट कैन आई से टेकिंग प्रोजेक्ट 30 times इज टाइम कंज्यूमिंग. इतना टाइम किसके पास है कैलकुलेशंस करने के? सो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, हाँ 30 times आंसर आया, बट it is less practical, impractical to sit and calculate for 90 years. So in that case, we have another method for making the projects comparable, which is called as equivalent annualized criteria. Equivalent annualized criteria. किसी ने अभी सही बोला था कि सर there is one more method called equivalent annualized criteria. So in that case, we follow this method. Yes. And what was the formula to calculate equivalent annualized? Can I say it is NPV of the project divided by PVAF of the project?
Yes or no? This formula, if you want to interpret this formula इन सिंपल टर्म्स, हाँ, इन सिंपल लेमन टर्म्स, आपको इस फॉर्मूला को ऐसे समझनी है कि पर ईयर मुझे प्रोजेक्ट कितना एनपीवी जनरेट करके दे रहा है इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स, ठीक है? पर ईयर मुझे प्रोजेक्ट ए कितना एनपीवी जनरेट करके दे रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया. सो लेट्स से पर ईयर एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए कम्स टू 1500, and by applying the same formula, per year NPV of B is able to generate 800 rupees. So can I say now this is comparable because both are on per year basis now, कि एक साल में प्रोजेक्ट ए कितना एनपीवी जनरेट करके दे रहा है तो 1500, एक साल में प्रोजेक्ट बी कितना एनपीवी जनरेट कर रहा है करके दे रहा है 800. सो नाउ इट इज कंपेरेबल बिकॉज बोथ आर नाउ ऑन पर ईयर बेसिस एंड यू सिलेक्ट हायर वन, ठीक है? जिसका इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया ज्यादा, वी विल सिलेक्ट दैट बिकॉज रिप्लेसमेंट चेन मेथड हैज सम लिमिटेशंस. यहाँ पे तो मैंने 30 और 90 लिखा, सो चलो कोई 30 साल तक कैलकुलेशन करने बैठेगा, नो वरीज. मान लो 150 होता तो ये वो भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता, वो जॉब छोड़ के चला जाता कि नहीं करनी मुझे ऐसी जॉब, इतना कैलकुलेशंस आ रहे हैं. Are you following? So in that case, the shortcut method is equivalent annualized criteria. You just bring the NPV on per year basis and then you compare. Well, any doubts? Any queries still here? Yeah, annuity factor is nothing but PVAF, present value annuity factor. Last but not the least, capital rationing. Decision making under capital rationing scenario. First of all, let's understand the meaning of capital rationing. Can I say capital rationing is a situation where there are multiple projects that company can take, and all of them has positive NPV. See, NPV decision criteria is very simple. If the project has positive NPV, you should go for all the projects. This is what NPV criteria simply says. अगर सब प्रोजेक्ट का पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है, देन यू शुड गो फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स. बट कैन आई से कंपनी को कैपिटल की रिस्ट्रिक्शन क्या कंस्ट्रेंट भी होगा? देयर माइट बी अ कंस्ट्रेंट ऑन फंडिंग्स ऑन कैपिटल रिक्वायरमेंट. Yes or no? So that is capital rationing situation. There are multiple projects with positive NPV, but due to funding constraints, due to fund constraints, funds limitation, company is not able to take all the projects. सब नहीं ले पा रही है. So can I say अब हमारा एज अ लेमैन नॉर्मल सोचो, एज अ बिजनेसमैन सोचो, कैन आई से हम इसमें से बेस्ट सिलेक्ट करेंगे. सो हाउ टू चूज द बेस्ट? दैट कैपिटल रैशनिंग concept tells you. Okay, first of all decide, first of all check whether projects are divisible or not. Divisible, or whether projects are not divisible. Yes or no? Divisible means part project is also possible. Let's say project F, ये सारे प्रोजेक्ट ले लिए आपने, ए बी सी डी ले लिए. अब प्रोजेक्ट एफ के लिए 1,00,000 रुपया चाहिए, बट यू जस्ट हैव 20,000 rupees नाउ लेफ्ट इन योर पॉकेट. तो व्हेन प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, इट सेज कि पूरा 1,00,000 का प्रोजेक्ट एफ नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं, 20,000 तक का लो, मीन्स 20% लो. आर यू फॉलोइंग? अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट्स आर divisible? It means part of the project is possible. Part is possible. You can take the project in parts as well. But when projects are not divisible, it means अगर आपको प्रोजेक्ट एफ भी लेना है तो 1,00,000 तो लगेगा ही लगेगा, वरना लो ही मत, वरना प्रोजेक्ट जी एच आई जे के एल में से जो लेना है ले लो. आर यू फॉलोइंग? So when projects are divisible, can I say a decision making criteria
was using PI method, or I can say NPV per rupee of investment method? Yes or no? When project was divisible, तो हम क्या करते थे कि 1 रुपी ऑफ आउटफ्लो कितना इनफ्लो जनरेट करके दे रही है, और 1 रुपी ऑफ आउटफ्लो कितना एनपीवी जनरेट करके दे रही है. Both would give the same answer only, so don't worry. So when projects are divisible, you have to decide applying profitability index method or by calculating NPV per 1 rupee of investment. Followed? And when projects are not divisible, means part project possible ही नहीं है, लेना हो तो पूरा लो वरना कुछ ना लो. In that case, we used to decide based on NPVs. So जिसका NPV ज्यादा, we used to give ranking. Let's say project A का सबसे ज्यादा NPV, तो we will take project 1 entirely. फिर project C has second best NPV. So as per ranking, second project that you should take is project C, and likewise हम करते थे. So this was all about capital rationing situation. बोलो, any doubt student, any questions, any concerns? With this, all the concepts of capital budgeting are clear. We have quickly revised that. Quickly में भी 1 घंटा हो गया. So this is how lengthy the chapter is. Concepts revise करने में भी 1 घंटा हो गया. Followed? And now, any doubts still here, students? If not, I will proceed further. I am waiting for a minute or for 30 seconds. Concepts में कुछ doubt हो तो अभी पूछ लो. And I know you are eagerly waiting for some practical problems. So don't worry, वो भी करवाऊंगा. Yes, we will try to combine all the combination and all the combination नहीं. We will check कौन सा प्रोजेक्ट का एनपीवी सबसे ज्यादा है. So we will give the rankings based on that. Once the rankings are given, फिर हम क्या करते थे, फिर हम चेक करते थे कि हमारे पास अवेलेबल फंड्स कितना है. लेट्स से अवेलेबल फंड इज 2 लाख. ठीक है, लेट्स से इट इज 2 लाख. अब मान लो प्रोजेक्ट ए इज गिविंग हाईएस्ट एनपीवी एंड प्रोजेक्ट ए इज कॉस्टिंग 20,000. तो कहने से पूरा प्रोजेक्ट ए ले पाएंगे बिकॉज इट इज जस्ट कॉस्टिंग 20,000. तो इसमें से हम 20,000 माइनस करते थे. अब बचा कितना, 1,80,000. नाउ सी फॉर द नेक्स्ट बेस्ट प्रोजेक्ट. कहने से नेक्स्ट बेस्ट इज प्रोजेक्ट सी एंड लेट्स से इट कॉस्ट 50,000. तो कहने से हम प्रोजेक्ट सी पूरा ले पाएंगे 50,000 का. So now the balance is 130. Now go for the third best project. Let's say it is project D, which cost 90,000. तो कहने से हम 90,000 पूरा ले पाएंगे. So now the balance left is 40,000. Now fourth best project is project E. But project E is costing 1 lakh. तो कहने से हमारे पास 1 lakh का तो फंड है ही नहीं, 40,000 ही है. And since projects are not divisible, हम E इक्वल नहीं ले पाएंगे. So we have to ignore project E. Now fifth best project is F, which cost 35,000. तो कहना है हम F पूरा ले पाएंगे 35,000 and balance surplus would be 5,000. So this is how you give rankings and based on that you select the project. Followed? Anurag? ठीक है. So now, very important, the concept clarity or concepts revision is done. We have quickly covered all the parts of the chapter. We have quickly revised that. Now very important, let's take a practical problem. And I know ज्यादातर सब स्टूडेंट्स को रिप्लेसमेंट डिसीजन क्वेश्चन में डाउट आता होगा. It gets tough for you all. So let's solve a question on replacement decision. उसमें स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम्स होती है in approaching the question on replacement decision. So I will quickly take a solution, sorry, a question on
रिप्लेसमेंट डिसीजन। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व। दिस इज आरटीपी मई 2024 अटेम्प्ट का क्वेश्चन। आरटीपी मई 2024 इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इट इज क्वेश्चन नंबर 5। आई विल क्विकली गो थ्रू दिस बिकॉज इसके बाद मुझे डिविडेंड डिसीजन भी एक्सप्लेन करना है, रिवाइज करवाना है। HMR Limited is considering replacing a manually operating old machine with new machine. ठीक है, old machine had been fully depreciated for tax purpose. So as far as taxation is concerned, उसका WDV is 0. But it has a book value of 2,50,000 on 31st March. See, FM में हमें ज्यादातर बुक वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, द मशीन हैज बिगन causing problems with breakdown and it cannot fetch more than 40,000 if sold in the market at present. मतलब आज हम ये ओल्ड मशीन बेचने जाए तो कोई हमें 40,000 से ज्यादा दे नहीं पाएगा। It will have no realizable value after 10 years. The company has been offered 1,50,000 for the old machine as a trade-in on the new machine, which has a price of rupees 6 lakh. Means now company is contemplating कि क्या हम नया मशीन ले। नया मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट इज 6 लाख, बट हम सामने ओल्ड मशीन देते हैं तो 1.5 लाख का हमें ऑफर मिल रहा है। मींस एक्सचेंज ऑफर कि आप 6 लाख का नया मशीन लो, 1.5 लाख का ओल्ड मशीन का हम आपको देंगे एज इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज प्राइस। मींस कहना इसे मुझे तो 4.5 लाख में ही पड़ेगा। यस और नो? 1.5 लाख का ट्रेड इन मींस एक्सचेंज ऑफर। ठीक है, जैसे यू एक्सचेंज योर ओल्ड फोन्स while buying the new phone. ठीक है, तो उतना प्राइस कम हो जाता है ना आपका। सेम सिचुएशन। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years with salvage of 35,000. Further, the company follows return down value method depreciation at 10%, but for tax purpose, straight line method depreciation is used. So in other words, बुक्स में जो भी मेथड होने दो, हमें तो कैश फ्लो से मतलब है। कैश फ्लोज के लिए टैक्स जो होगा उससे मतलब है। सो इन आर केस आर स्टेटमेंट फ्रॉम सेल्स to cash inflows, we will take depreciation on straight line basis because as far as taxation is concerned, straight line method depreciation is used. Are you following? A working capital of 50,000 will be needed and it will be released at the end of the 10th year. ये स्टेटमेंट एंड इट विल बी रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द 10th ईयर बोला ना होता ना, फिर भी हम बाय डिफॉल्ट समझ ही जाते हैं बिकॉज वर्किंग कैपिटल इज ऑलवेज रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द लाइफ. सो टुडे इट इज एन आउटफ्लो बट एट द एंड ऑफ 10th ईयर इट इज एन इनफ्लो. Given below are expected sales and cost for both old and new machine. From the above information, analyze whether old machine should be replaced or not. If the cost of capital is 10%, means discounting rate is 10%. Income tax 30%. Assume book profit is treated as ordinary income for tax purpose. Also estimate the internal rate of return IRR of the replacement decision. Calculations up to 3 decimal. So can I say this is a replacement decision ka question? In this question, this is a good sum actually. In this question, there is 2 criteria. One is old machine and I would say new machine. So company क्या सोच रही है? What company wants to decide कि हम new machine और old machine को replace करें कि नहीं. So replacement decision में कहना है हम incremental NPV find करते हैं. Incremental NPV means first you calculate NPV if old machine is continued. ठीक है, मान लो ये सब नया मशीन का झंझट ही नहीं होता तो ओल्ड मशीन ही कंटिन्यू करते तो उसमें एनपीवी कितना आ रहा है. देन
we used to compare that NPV with NPV of new machine, as if कि now new machine has replaced the old machine. तो क्या NPV आएगा? And the difference is called as incremental NPV. Are you following? So when replacement decision question comes, you have to calculate incremental NPV. This is step number one. How to calculate replacement NPV? First, as if the old machine is continued. Then what would be my NPV? Means ये नया मशीन की कोई स्टोरी या कोई झंझट ही नहीं है. As if कि my business goes on with the old machine only. तो क्या NPV होता? It was compared with NPV as if कि now new machine has replaced the old machine. Means कि can I say in other words, if old machine is discontinued and sold, so you have to calculate NPV under these two scenarios. Then compare कि क्या इसका NPV इससे ज्यादा है. If incremental NPV is more, then company should go with the replacement decision. But if this NPV is less than this, then it is not beneficial on the company's part to go for replacement decision. Are you following? So in short, whenever there is a replacement decision ka question, your target should be to calculate incremental NPV. Incremental NPV कैसे calculate होता है? तो उसके लिए दो सिनेरियोस लेने पड़ेंगे. सिनेरियो नंबर वन, as if कि my business continues with old machine only. तो क्या होता? तो क्या सिचुएशन होती? And second scenario, new machine has taken over the old machine and old machine is sold. तो क्या सिचुएशन होती? Followed? Any doubts still here, students? Any queries, any concerns? Bolo, any doubts? Any concerns? Okay, so let's move forward. So let's calculate NPV if old machine is continued and let's calculate NPV new machine is purchased. In other words, old machine is replaced and sold. So guys, मुझे sales से figure दी है. What is my sales? My sales is 60,000 units into 18 rupees and 80,000 units into 18. So now please take the calci in hand और आप प्लीज क्विकली मुझे बताओ सेल्स कितना आएगा. 960 आएगा एंड दिस विल कम टू 14,40,000. ठीक है. लेस वी विल subtract operating expenses, but all the cash operating expenses we will not consider the depreciation first. So operating expense में first is material, second is labor. इसके अलावा कौन से है? इसके अलावा there is indirect cash cost, indirect operating expense. ठीक है. So when I say resultant figure will be called as NPBDT for me. So material cost कितना है? Material cost is 60,000 into 5 and 80,000 into 5. 60,000 into 5 and 80,000 into 5. 3 lakh, 4 lakh. Correct? Labor cost is annual operating hours. See, labor cost is not per unit, but it is per hour. Huh? Students do mistake over here. वो 60,000 into 50 करते हैं.
but they don't see that labor cost is per hour. So when I say operating hour is 2,800 and labor cost per hour is 50. So in this case, it would be 2,800 into 50, 1,40,000, and 2,800 into 75, which comes to 2,10,000. Operating, indirect cash cost 1 lakh and 1,75,000. 1,75,000. 1,75,000. This is 10,80,000. 60,000 into 18 is 10,80,000. Okay, so my NPBDT means net profit before depreciation and tax comes to how much? Let me open the solution as well so that हमारा fast हो calculation. NPBDT comes to 540 and 655. 540 and 655. 655. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड टेल मी, क्या ओल्ड मशीन में कुछ डेप्रिसिएशन आएगा? बोलो, ओल्ड मशीन में डेप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा? ये कहना है इट इज फुल्ली डेप्रिसिएटेड फॉर इनकम टैक्स पर्पस, मतलब टैक्स बेनिफिट जो भी लेना था वो सारा निचोड़ लिया है ओल्ड मशीन में से, सो कुछ नहीं आएगा. आर यू फॉलोइंग? बिकॉज इट इज फुल्ली डेप्रिसिएटेड एज फार एज इनकम टैक्स पर्पस इज कंसर्न. मीन्स डेप्रिसिएशन से जो फायदा होता फ्रॉम ओल्ड मशीन वो पूरा निचोड़ चुके हम, तो अब कुछ बचा नहीं है. फॉलोइंग? So entire juice is extracted earlier only in the form of tax benefit from depreciation of old machine. But new machine में depreciation will come. Yes or no? Can I say depreciation for income tax purposes is clearly mentioned? From books purposes it is WDV, but from income tax purposes we have to use straight line method. तो इन अदर वर्ड्स कैन आई से स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते थे? इट इज नथिंग बट ओरिजिनल कॉस्ट लेस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ. यस और नो? विच इज नथिंग बट 6 lakh इज माय ओरिजिनल कॉस्ट. सैल्वेज वैल्यू इज 35,000. लाइफ इज 10 years. बताओ हाउ मच इज माय डेप्रिसिएशन फॉर न्यू मशीन कमिंग? 6 lakh minus 35,000 divided by 10. 56,500. Yes or no? So my NPBT, here it would be 5,40,000, and in this case it would be 655 minus 56,500, which comes to 598,500, less tax at 30%. So I will get NPAT, but I am concerned with cash inflows. So I will add back the depreciation, which is nil in this case, and which is 56,500. So NPAT for old machine comes to 1,62,000. No, sorry. NPAT comes to tax 162 आ रहा है. NPAT is coming to 3,78,000. Cash inflows after tax 378, 3,78,000, and in this case it would be 598,500, 0.7, 418, 950. Sorry, this has to be added back. And my cash inflows after tax comes to
plus 56,500 418,950 475 450 475 450 की 750 598 500 का 70% 418 950 प्लस 56 500 475 450 है 475 750 नहीं है. So someone got 750, that is wrong. Yeah. So this is my cash inflow after tax. Yes or no? So can I say my incremental cash inflows after tax? It is nothing but 475 450 minus 378. How much is my incremental cash inflows after tax? Minus 378. 97 450. Correct? And can I say this is incremental cash inflows? Means every year मुझे incremental cash inflows 97 450 97 450 97 450 till 10 years होता रहेगा. So if I want to find the present value of incremental cash inflows after tax, so can I say we have to discount this or simply multiply it with by PVAF factor at your discounting rate? How much is the discounting rate? 10% for 10 years. Yes or no? So how much is the present value annuity factor for 10% 10 years? सर एन्युटी फैक्टर क्यों लिया सर? टेबल बना के प्रेजेंट वैल्यू क्यों फाइंड नहीं किया? Again, I say cash inflows per annum is constant now. This is constant. So shortcut way to find the present value, if we multiply it with annuity factor तो मिल जाएगा. और else जिसको टेबल बनाना है ईयर कैश इनफ्लोस डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू वैसे भी कर सकते हो. कितना आ रहा है? हाउ मच इज द प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर 10% 10 years? Let's just not waste our time and let's just see from the solution कितना है. It is 6.144. It is 6.144. 6.145. Okay, 6.144. So 97 450 into 6.144, which comes to, so 97 450 into 6.144, 598 733. So this is just my incremental cash inflows after tax. Are you following? Bolo, any doubts till here, students? Any doubts in this part? Any doubts, any queries till here? This was the major portion of the question. Any doubts, any concerns? So part 1, we are calculating the total present value of cash inflows. उसमें incremental cash inflows from operations after tax is done. This is done. So this is, I will say, part 1. Part 1 is done. Now, और इनफ्लोज में क्या क्या आ सकता है? इंक्रीमेंटल इनफ्लोज में सर वर्किंग कैपिटल रिलीज आएगा. यस और नो? इफ वी कंटिन्यू विद द ओल्ड मशीन, उसकी तो वर्किंग कैपिटल कुछ है ही नहीं, कुछ क्वेश्चन में बता ही नहीं है. सो वी हैव टू अज्यूम जीरो. But if we go for the new machine, that is if we replace the old machine with new one, working capital release hoga, and working capital release at the end of the 10th year would be an inflow for us. Yes or no? So can I say that is also an incremental inflow that we would earn? So second part is
release of working capital at the end of 10th year. ठीक है, सो कहने से वो कितना है, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, it is 50,000. So when I say 50,000 and now you multiply this with discounting factor and with not the annuity factor at 10%, 10th year का जो discounting factor है वो, so how much is the discounting factor of 10% at 10th year? ओके 598,733, यस दैट इज करेक्ट, वो हो गया. अब मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर बताओ ना, कितना, 0.3855. आई एम बिलीविंग दैट इज ट्रू. 0.3855. So my release of working capital or incremental cash inflows in the form of working capital release कितना है, 50,000 into 0.3855, 19,275. So this is part 2, 19,275. Clear? So 19,275 is, अच्छा they have told you to round it off to 3 decimals. So वो राउंडिंग ऑफ के डिफरेंस की वजह से 25 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, बट नो वरीज इन दैट. ठीक है, अब सोचो. सो पार्ट 2 इज ऑल्सो डन. कैश इनफ्लोज में क्या क्या आ सकता है, तो वन इज कैश इनफ्लोज फ्रॉम योर ऑपरेशंस. ऑपरेशंस इज नथिंग बट ये सेल्स से लेके पूरा टेबल. सेकंड क्या हो सकता है बताओ. सो सेल्स से लेके टेबल तक, दिस इज इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस. सो अनदर फॉर्म ऑफ कैश इनफ्लोज इज वर्किंग कैपिटल का रिलीज, सो दैट ऑल्सो वी कंसिडर्ड दैट. कहने से थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी बेसिक थिंग, स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू इज ऑल्सो एन इनफ्लो ना. ए ओल्ड मशीन का देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, but new machine का there is scrap value. So whatever scrap value from new machine will we get, can I say it is incremental cash inflow from scrap value. So how much is the scrap value, and scrap value is generated at the end of life, that is at the end of 10th year. So it is nothing but 35,000 into 0.3855. So 35,000 into 0.3855, 13,493. थर्ड पार्ट. सो कैश इनफ्लोज में हम बारी बारी एक एक चीज कैलकुलेट कर रहे हैं. फर्स्ट वी कैलकुलेटेड इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज, तो उसका 598,733 आ गया. बट सर ऑपरेशनल एक्टिविटी के साथ वर्किंग कैपिटल भी रिलीज होगा ना. So second we calculated cash inflows or in fact present value of cash inflows from release of working capital. सर वो भी हो गया, बट सर स्क्रैप भी मिल रहा है at the end of life. Okay, so we considered present value of scrap as an inflow. बोलो anything else left? Anything else left students? So ये हमारा 13,510 भी आ गया. Any doubt students? अब कुछ बचा इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो में. सारे कैश इनफ्लोज आ गए, ऑपरेशनल एक्टिविटी से आ गया, वर्किंग कैपिटल आ गया, स्क्रैप वैल्यू आ गया. सो कैन आई से माय टोटल present value of all the cash inflow is nothing but 598,733 plus 19,275 plus 13,493. कितना आ रहा है? What depreciation part? A depreciation part is considered in operational activity, na? So which depreciation part you are talking about?
ये उसकी सारी इफेक्ट हमने याद दे दी ना डेप्रिसिएशन की, तो जो भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ रहा है वो याद हो गया. सो नाउ डेप्रिसिएशन इज नॉट कंसिडर्ड सेपरेटली. 631,501. So now let's calculate present value of cash outflow. Incremental present value of cash outflow. So how to calculate incremental present value of cash outflow? My screen is 631,501. Just like we calculated incremental present value of cash inflow, वैसे ही हम incremental present value of cash outflow find करेंगे. So incremental present value of cash outflow. Can I say first is always original investment? But यहाँ पे original investment of old machine would be sunk cost for our decision making. Why? क्योंकि अब हम नया रिप्लेस मशीन नया ले या ना ले, ओल्ड मशीन का कॉस्ट तो इनकर हो ही गया है. So it is irrelevant for our decision making now. So it is a sunk cost for us. So आपको ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ओल्ड मशीन से अब कोई लेना देना नहीं है, वो पैसा गया, वो डूब गया. आप चाहे नया मशीन लो ना लो, दैट कॉस्ट इज ऑलरेडी इनकर्ड एंड दैट इज ऑलरेडी बॉर्न बाय यू. वो डूब गया है. इट इज सम्ड फ्रॉम योर पॉकेट्स, फ्रॉम योर बैंक अकाउंट. ठीक है. सो कहने से मैं इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो would be original investment of new machine. Original investment in new machine. ठीक है. सो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, मुझे नया मशीन कितने में मिल रहा है? 6 लाख में. सो मैं 6 लाख, क्या मैं 6 लाख भर दूंगा टू दी पार्टी? नो. व्हाट आई विल से, अब विजुअलाइज कि 6 लाख का नया मशीन है, अग्री. बट मेरे पास एक ओल्ड मशीन पड़ा है जो मैं आपको एक्सचेंज ऑफर में देना चाहता हूं. एंड आई विल आस्क द वेंडर, आप वो ओल्ड मशीन का कितना दोगे? सो ही सेड सर आपको 1.5 लाख दे दूंगा. सो कहना है मेरे जेब से तो 4.5 लाख रुपया ही गया. सो आई विल सब्ट्रैक्ट ट्रेड इन वैल्यू, ट्रेड इन वैल्यू फॉर ओल्ड मशीन. आर यू फॉलोइंग स्टूडेंट्स? फॉर ओल्ड मशीन. जब मैं नया मशीन लेने जाता हूं तभी मुझे एक्सचेंज में ऑफर मिलेगा. आर यू फॉलोइंग? सो 1,50,000 gets subtracted today only. So 4,50,000 is my original investment, or I would say net investment. Net investment in new machine. ठीक है. Are you following? Any doubt, student? Any query still here? 450. Clear? So this is how you should see. This is not completed yet, huh? But this is how step by step you should go. सारे चीज एक साथ दिमाग में लाओगे ना तो विल नॉट बी एबल टू सॉल्व. सो कैश आउटफ्लो में कैन आई से माय फर्स्ट पार्ट इज डन, कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. सेकेंड पार्ट, अब मैंने जो ये 1.5 लाख में ओल्ड मशीन बेचा है, कहना है उसमें मुझे कुछ गेन्स हुआ है, आई हैव अर्न समथिंग. सर आपको कैसे पता चला गेन्स हुआ है? क्वेश्चन से पता चला. देखो कहां से पता चला, मैं बताता हूं. The old machine has been fully depreciated for tax purpose. Means can I say, as per my calculation, आज के तारीख में जब मैं नया मशीन लेने जाता हूं, for me the value of old machine is zero. Yes or no? For me the value of old machine is zero because it is fully depreciated. उसमें से जो टैक्स बेनिफिट लेनी थी वो सारी ले ली. सो फॉर मी वो मशीन की वैल्यू आज 0 है फॉर मी, फॉर माय कैलकुलेशंस. यस और नो? सो कैन आई से WDV एज ऑन टुडे. टुडे मींस जब मैं ये मशीन लेने जाता हूं तब, और मशीन कब लेने जा रहा हूं? नया आज ही लेने जा रहा हूं.
Can I say it is zero? And my selling value, my sale value of that old machine is nothing but 150, 1,50,000. Yes or no? मैंने 1.5 लाख में बेचा ना, 1.5 लाख में एक्सचेंज किया. So when I say my gains on sale of old machine is how much? 1,50,000. Yes or no? So this is my income that will come in the P&L credit side. Are you following, students? समझ रहा ये point? This is very important. This part of the point most of the students forget to do, but it is very important. Can I say ये gains मेरे income के credit side में दिखेगा 1,50,000, and question in the last line has specified. Question पढ़ना बहुत आवश्यक है. Has specified that any book profit will be treated as ordinary income for tax purpose. मीन्स आपके बुक्स में भी कोई प्रॉफिट हुआ, ऐसी कोई इनकम हुई है फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स और एनीथिंग, विल बी कंसीडर्ड एज इनकम ओनली फॉर द टैक्सेशन पर्पस. सो कैन आई सी इन अदर वर्ड्स, मुझे ये गेन्स पे टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स ऑफ 30%, because it will be treated as ordinary income only and not capital gains income. Following, tax of 30% on above. So can I say it will be 45,000? Are you following? Are you following? So आज के तारीख में मेरा ये भी एक आउटफ्लो हुआ, टैक्स ऑन द गेन्स ऑफ सेल ऑफ ओल्ड मशीन. सी गेन्स हो गया 1.5 लाख का, बट मेरा पूरा 1.5 लाख का फायदा नहीं हुआ, उसमें से 30% मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स ऑन ऑर्डिनरी इनकम. फॉलोइंग. सो कहना है आज मेरे जेब से ये 45,000 जाएगा. सो दिस इज आज मेरे जेब से जा रहा है, मीन्स इट इज एन आउटफ्लो फॉर मी. स्टूडेंट्स, आर यू फॉलोइंग? Any doubts, any concerns, any queries? Yes, it is not included in the cash flow to avoid confusion. Why? Because सारा हमने सेल्स लिया है ऊपर, जो इनकम स्टेटमेंट में आइडियली जो चीज आती है वो सारी ले ली है. सो दैट टू अवॉइड द कंफ्यूजन वी हैव इग्नोर्ड अबव. यू कैन टेक अबव एज वेल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन वी हैव टेकन दिस सेपरेटली. ठीक है, आप ऊपर भी ले सकते हो, पर मैंने सारे वेरिएबल सेम रहे एंड इट गेट्स कंपेरेबल, इसलिए मैंने ऊपर नहीं लिया है इन द इनकम स्टेटमेंट. ठीक है, बट ट्रीटमेंट तो वैसी ही करी है एज इफ कि मैंने ऊपर किया हो. फॉलोड. सो कैन आई से माय टोटल आउटफ्लो, माय टोटल पीवीसीओ would be 4,50,000 in the form of net investment in new machine, प्लस मैं सरकार को, गवर्नमेंट को 45,000 का टैक्स भरूंगा. सो 4,95,000 becomes my present value of cash outflow. एंड ये पीवीसीओ सब आज के डेट पे हो रहा है. Everything is happening today at year zero. So we don't need to discount that. I hope you follow this. ठीक है. हाँ, and one more thing, we will introduce working capital as well. Working capital of 50,000 will be introduced today. So my net cash outflow today would be 495 plus 15. So third part would be introduction of working capital. So 545, 5,45,000. Okay, so this is my present value of cash outflow that is happening today itself at year zero. Okay. So let's just check our solution.
631,510 and minus 545. So my NPV would be 631,501 minus 545. 631. So this is incremental NPV. Yeah? 631,501 minus 545, which comes to sorry, Samruddhi, I didn't get. Will be not deduct net income from old machine with incremental. Yeah, explained you na. We can take in the statement above as well. But just to avoid confusion, मैंने अलग से नीचे लिया है. ठीक है? And if you are comfortable taking above, then you can take that as well. Answer would be same. So 631,501. 631,501 minus 545. 86,501 is my incremental NPV. And since incremental NPV is positive, it is advisable for the company to replace the machine. Followed everyone? Followed everyone? Acha, one more thing I have missed out here. कोई बता सकता है क्या मैंने क्या मिस किया? I have deliberately missed that. And answer तो यही है. I have deliberately missed that in this question. कोई बता सकता है मुझे क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है. दिस क्वेश्चन में उसकी कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने मिस कर दिया है. बट इन सम अनदर क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट. सी कैन आई से न्यू मशीन would be sold at the end of 10th year? Would be sold at the end of 10th year? Yes or no? ये जब 10 साल खत्म हो जाएंगे तब मैं नए मशीन का भी क्या करूंगा, बेच दूंगा स्क्रैप पे. और मुझे स्क्रैप वैल्यू कितनी आएगी? 35,000. करेक्ट. अच्छा, अब ये बेचने पे मुझे कितना फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? कैन आई से आई विल कंपेयर इट, आई विल डिडक्ट इट विद द WDV value as on 10th year, as on 10th year. Yes or no? अब ये बेचने पे मुझे फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, कैसे पता चलेगा? कैन आई से हैव टू कंपेयर इट विद द WDV एज ऑन द 10th ईयर, कि 10वें साल पे मेरे बुक्स में 10th ईयर पे कितना WDV बचा है नए मशीन का, एंड द रिजल्टेंट फिगर विल बी गेन और लॉस. Yes or no? But my WDV on the 10th year for new machine will come 35,000 only. And gain or loss is zero. That's why I've ignored. Sir, ऐसे कैसे 35,000 आ गया? Can I say depreciation on new machine is 56,500 every year? एकदम स्टार्टिंग में देखो, स्टेटमेंट में देखो, 56,500 था एवरी ईयर ऑन न्यू मशीन. Yes or no? So my new machine started with 6 lakh. अब आप एवरी ईयर 56,500 माइनस करते जाओ टिल द एंड ऑफ 10th ईयर. आपका WDV एट द एंड ऑफ 10th ईयर आएगा 35,000. सर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बता रहे हो? बिकॉज डेप्रिसिएशन मेथड इज SLM. Once you use SLM method, WDV at the end of life will be equal to your scrap value only. Are you following? So 10वें साल पे my new machine का WDV was 35,000 and I sold it for 35,000 itself. So there is no gain or loss. But let's say if we had followed some another method of depreciation, and let's say WDV at the end of the year 10th year 35,000 होता and मैंने बेचा है 50,000 में, तो कहने से 15,000 is gain for me. So उसका tax would also be an outflow at the end of 10th year. Are you followed? But इस case में gain or loss is zero. That's why I deliberately ignored. Did you follow this point? बाकी gain on the sale of new machine at the end of life भी आता. But since
New machine is depreciated at SLM. Scrap value at the end of life will be equal to your WDV at the end of life. So there would not be any gain or loss. But if in case gain or loss hota, so we have to take tax on gain or loss on new machine as well at the end of 10th year. Did you follow this? बोलो स्टूडेंट्स, डिड यू गेट दिस? इसलिए इस क्वेश्चन में मैंने डेलिबरेटली इग्नोर किया है बिकॉज आई नो दैट न्यू मशीन इज डेप्रिसिएटेड यूजिंग एसएलएम. सो एसएलएम के एंड में जो स्क्रैप या जो डब्ल्यूडीवी होगा वही स्क्रैप वैल्यू होगा. Yeah, so can you see here terminal cash flows from new machine? So salvage value is equal to your WDV at the end of 10th year. So there is no gains or loss. So net आपको 35,000 जो salvage मिला है that would be your cash inflows. Followed? So this is how you approach the question on replacement decision. So आपको replacement decision का question आए तो एक ही चीज सोचनी है कि आई हैव टू कैलकुलेट इंक्रीमेंटल एनपीवी. इंक्रीमेंटल एनपीवी ढूंढना है, इंक्रीमेंटल एनपीवी ढूंढना है. बस योर फोकस should be on that only. And what is incremental NPV? Incremental NPV में we compare two scenarios. If old machine is continued, तो क्या situation होती? If new machine is taken over, or if new machine is bought and old machine is replaced, तो क्या situation होती? दोनों का difference is incremental NPV. And if you are able to crack incremental NPV ka question on first go, then you can solve any capital budgeting ka question. Please give example on gain on loss and its tax implications. Okay, example is this. Let's say for example, WDV as on 10th year. ठीक है, WDV as on 10th year. From tax point of view, tax purpose. WDV as on 10th year, but from taxation point of view. Let's say in this present question comes to 15,000. ठीक है, हाइपोथेटिकली आ नहीं रहा है, इसमें तो 35,000 ही आ रहा है, बट हाइपोथेटिकली लेट्स से 10वें साल पे WDV कम्स टू 15,000 एज पर टैक्सेशन. ठीक है, सो ये 15, तो आपको ऐसा सोचना है कि ये 15,000 की चीज आई हैव सोल्ड फॉर 35,000 at the end of 10th year. So can I say I am gaining 20,000 का profit? I am earning 20,000 का profit. So ideally on these gains you pay capital gains tax. जो भी क्वेश्चन में कैपिटल गेन्स टैक्स का रेट दिया हो, यू आइडियली अप्लाई दैट रेट. ठीक है, ठीक है. सो लेट्स से कैपिटल गेन्स टैक्स इज 12.5% एज पर द न्यू रूल्स. 20,000 into 12.5%. So can I say 2500 रुपए का it is an outflow for you because you are bearing the tax on these gains? Yes or no? So this sale value of 35,000 will be an inflow क्योंकि at the end of 10th year आपके जेब में 35,000 आएगा, but सामने you will pay 2,500 to government in the form of capital gains tax. Yes or no? And this entire story is at the end of 10th year. So can I say this 2,500 would be an outflow, but इसको discount करना पड़ेगा because this story is happening at the end of 10th year. Followed? Followed? Debashish या किसका? The student who had this doubt? Debashish, I guess. Now reverse scenario. Let's say WDV from taxation point of view at the end of 10th year comes to 45,000.
सो आपने 45,000 की चीज कितने में बेची? 35,000 में. सो कैन आई से यू आर इनकरिंग अ लॉस ऑफ 10,000 नाउ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस? Yes or no? So now it is a loss of 10,000. So on this loss, can I say you will save some taxes? So let's say the capital gains tax is again 12.5%. So 10,000 pay 12.5% is your savings in tax. So savings in tax will also be an inflow. So 35,000 तो मिल ही रहा है. 35,000 is an inflow because you are getting by selling the machine. वो तो inflow है ही, but साथ में you are saving taxes on this loss because loss adjust हो जाएगा ना दूसरी income के सामने. Are you following? So savings in taxes. So tax saving in this case would be 1250. So this will also be an inflow at the end of 10th year. So this is how you tackle capital gains and tax on it when it is given in the question. ठीक है? Is it clear, Debashish? So you have to check what is the WDV at the end of life. So WDV is 45,000, means value for me is 45,000 for that machine and I have sold for 35,000. So 45,000 की चीज मैंने 35,000 में बेची तो 10,000 का नुकसान किया मैंने. नुकसान किया मीन्स टैक्स सेविंग्स होगा उस नुकसान पे. Yes or no? So tax savings on loss is an inflow. And since it is at the end of the 10th year, तो ये लॉस के टैक्स सेविंग्स को भी आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा. I hope this is clear now. And now let's move to next chapter, dividend decisions. So capital budgeting में, let me just conclude. There are 7 different techniques. Apart from that, there are some different concepts, some specific adjustments to be taken care of. Then try to practice more and more problems of investment decisions because it is a very important chapter. Second, if you are able to crack question on replacement decision, then other problems would be easier for you. ठीक है, बिकॉज रिप्लेसमेंट डिसीजन के क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग होते हैं. ठीक है, सो वी solved one question on that as well, and now we are moving to the next chapter, dividend decision. Now students, if you recollect or remember, financial manager or CFO of any company has to take 3 decisions in his financial life or in his corporate life. कौन से 3 decision? One is investment decision, one is financing decision, and one is dividend decision. ठीक है? And what do you mean by dividend? Dividend is nothing but distribution of surplus. Distribution of surplus or profit. ठीक है? This is the simple meaning of dividend. So under dividend decision, फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसाइड करना है कि वेदर माय कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड और नॉट. ये डिसीजन लेना है, वेदर माय कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड और नॉट. अच्छा, इफ यस, देन व्हाट शुड बी द प्रपोर्शन ऑफ द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. और इन अदर वर्ड्स कि मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए. शुड इट बी 10%? क्या मैं 20% पे आउट रेशियो करूं, 50% करूं, 90% करूं, 100% करूं, कितना करूं. So this decision has to be based on one ultimate objective. The ultimate objective of any financial manager is to maximize the market price of the company. जिस डिसीजन से कंपनी का मार्केट प्राइस मैक्सिमम होता है, you select or you take that decision. Let's say by paying 50% of dividend,
माई मार्केट प्राइस गेट्स मैक्सिमम, तो आप 50% पे आउट रेशियो करो. योर डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 50%. लेट्स से 10% पे मैक्सिमम मार्केट प्राइस हो रहा है, सो डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 10%. सर मैक्सिमम मार्केट प्राइस क्यों करनी है पर? ए बिकॉज मैक्सिमम मार्केट प्राइस विल जनरेट मैक्सिमम वेल्थ टू द शेयर होल्डर्स. जितनी मार्केट प्राइस ज्यादा कंपनी की, उतनी वेल्थ बढ़ेगी शेयर होल्डर्स की. एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कंपनी इज दिस ओनली, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ देयर इक्विटी ओनर्स. फॉलोड? सो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि वेदर माय कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और नॉट. इफ यस, तो व्हाट शुड बी द पे आउट रेशियो? कौन से पे आउट रेशियो में मेरा मार्केट प्राइस मैक्सिमम होगा? सो इन शॉर्ट, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो? दिस इज व्हाट डिविडेंड डिसीजन इज ऑल अबाउट. आर यू फॉलोड? इसके बाद हमने ये देखा था इस चैप्टर में कि whether dividend decision of financial managers affect market price or not. Whether company's dividend decision affect its market price or not. ठीक है, मीन्स की क्या 10% पे, इफ लेट से मार्केट प्राइस एट 10% इज लेट से फॉर 50, तो क्या मैं पे आउट रेशियो अगर 50% कर देता हूं, तो क्या ये मार्केट प्राइस सेम रहेगी या चेंज होएगी? विल इट चेंज और विल इट बी सेम? सो ये क्वेश्चन था अंडर दिस चैप्टर, वेदर कंपनीज डिविडेंड डिसीजन अफेक्ट मार्केट प्राइस और नॉट. अच्छा, 100% डिविडेंड पे आउट करता हो तो क्या मार्केट प्राइस स्टिल 50 रहेगी या 500 हो जाएगी या कुछ भी XYZ फिगर? आर यू फॉलोइंग मी? आर यू एबल टू विजुअलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? So in this chapter it was a war between two sides. It was a war between two sides. One side said that dividend decision does affect the market price. मीन्स आपका अगर 10% डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो मार्केट प्राइस इज लेट से 50. नाउ इफ यू आर चेंजिंग द पे आउट रेशियो फ्रॉम 10% टू 90%, तो मार्केट प्राइस 50 से चेंज डेफिनेटली होगा. सो वन साइड और वन टीम सेड yes, it definitely affects the market price, and one side or one team says no. ठीक है, so we used to study the war between the two teams. Whether company's dividend decision affect market price? Yes. तो yes वाले टीम में there was Walter, there was Gordon, and there was Graham and Dodd. And no वाले टीम में एक ही जन था, MM, Modi Gilani Miller. And MM is always on the no side, always on the negative side. He loves to play the negative role. कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज में भी वो नो साइड में ही था. चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर will not affect the value of the company or will not have any impact on cost of capital. This is what he said in capital structure theories. यहाँ पे भी he is saying that dividend payout ratio कुछ भी होने दो, wealth of the shareholders will remain same. Means market price same ही रहेगा. अगर अच्छा मार्केट प्राइस अलग भी होता है तो wealth of the shareholder will remain same. And not just the wealth of the shareholder, he went one step ahead कि कंपनी की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं होगा. मीन्स के डिविडेंड डिसीजन से कंपनी के वैल्यू में तो छोड़ो, शेयर होल्डर्स के वेल्थ में भी कोई चेंज नहीं होगा. दिस इज व्हाट MM सेड. आर यू फॉलोइंग? सो वी स्टडीड द थियरीज ऑफ डिविडेंड डिसीजन गिवन बाय वॉल्टर, given by Gordon, given by Graham and Dodd, and on the no side, we studied the theory given by MM. Apart from this, there were some practical approaches. Practical approaches में one was Lintner's model of dividend, of the optimum dividend payout ratio,
and second was residual approach. This all concepts in detail I have explained in my regular classes. Okay. Now let's just quickly revise the formula given by all these authors, given by all the financial scholars, and then let's take some practical problems. So first, Walter's model. जब भी Walter's model आप पढ़ो, first thing that you should get in your mind is that Walter is on the yes side of the team. Means के Walter के हिसाब से any changes in dividend decision will definitely impact the market price of the company. Means if you are changing the payout ratio from 10% to 50%, then market price will also change. It will definitely have the impact on market price. And if market price changes, the wealth of the shareholder will also change. Followed? Yes or no? And what was the formula of the Walter's model? Can I say he said that the price of the share today means P0 is nothing but D upon KE plus earnings minus D into ROI upon KE the whole upon KE. अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुई है, ये फॉर्मूला का लॉजिक क्या है? If any of the student has missed my regular classes, then I have explained the derivation of this formula in detail as well. Okay? So in revisionary lectures, I cannot again just explain you the derivation or explain you the entire concept. Followed? So this was the formula given by Walter. Acha, Walter ka one more very important point. Walter's model is also called as all or nothing approach. Walter's model का दूसरा नाम था all or nothing approach. Means Walter said that the optimum dividend payout ratio for a company is either 0% or 100%. Either आप 0% means कुछ भी dividend ना दो, और either आप 100% means जितना earnings कमाया है पूरा का पूरा dividend distribute कर दो. Are you following? This is optimum payout ratio as per Walter. Optimum dividend payout ratio as per Walter. Either you don't give any dividend, single penny bhi na do, or either you distribute 100% of your earnings in the form of dividend. अच्छा 0% कब होता था? Can I say when ROI was greater than KE? You distribute nothing and you retain everything. Are you following? And when ROI was less than KE, you distribute everything, retain nothing. See, a very simple logic or a trick to remember this is ROI को ऐसा समझो, this is the earning capacity of the company. कंपनी के कमाने की ताकत कितनी है, that is ROI. And KE means shareholders के कमाने की ताकत कितनी है, that is KE. ऐसा इसको याद रखो. Let's say ROI. ROI is nothing but the earning capacity of the company. Let's say 15% is the earning capacity of the company. Whereas shareholders from outside can maximum earn, let's say 8%. So shareholders की capacity कितनी है? They can just earn 8% from investment outside. So can I say it is beneficial for the investor to be invested with me, with my company? Because I have the capacity to earn 15% on the same amount that investor can earn 8%. Are you following? My company has the capacity to earn 15% on the same amount that you outside can earn 8%. So it is better na you be invested with my company. Yes or no? So it is better na if I retain everything and if I distribute nothing. Followed? So when ROI is greater than KE, you distribute nothing. You keep everything with the company. You, as a shareholder, be invested with the company. Followed?
in an opposite ROI, company ki earning capacity is 8%. But if I distribute this income to the shareholders, they can easily make 15% from outside. So can I say it is beneficial to distribute everything? Because मेरी उतनी capacity नहीं है. So it is beneficial not to be invested with me, but you take the dividends out and you distribute and you earn 15% from outside. Followed? So this was the entire concept of Walters. Any doubts in Walters model? Any queries? Any concerns? So this is how you should try to remember the logic of Walter. ROI means the capacity of the company to earn. KE means capacity of the shareholders to earn from outside or from somewhere else. Followed? So this was Walter. Second is Gordon's model. And Gordon's model is actually derived from the concept called dividend discounting model. Okay? As per Gordon, the price of the share today is nothing but D1 upon KE minus G. I hope you remember this formula. The assumptions of the Gordon model is K remains constant, G remains constant, life is infinite, and K should always be greater than G. Means the return expected by the shareholder should always be greater than the growth rate that company gives to you. Followed? So this was Gordon's model ki formula. Third, Graham and Dodd. Graham and Dodd model. As per Graham and Dodd, price of the share today is nothing but D plus E by 3 into multiplier. D is dividend, E is earnings. Huh? D1 is the expected dividend at the end of year 1. In Walter's model, D is again dividend, E is earnings, D is dividend, ROI, KE and KE. Followed? So this was Graham and Dodd. Fourth is MM. Formula of price today as per MM is nothing but D1 plus P1, 1 plus KE. This was the formula that MM has given. Now the detailed derivation and explanation of the logic of the formula is already explained in regular classes. So if someone needs more clarity, they can just watch the regular class video on dividend decision chapter. So this was formula given by MM. And MM by MM, you should remember that MM is on the negative side. He is playing the negative role. Means according to MM, dividend decision kuch bhi hone do, whether the company pays dividend or does not pay dividend, the wealth of the shareholder will always remain same. And not just the wealth of the shareholder, but value of the company will always remain same. So MM is on the negative side. उसके हिसाब से डिविडेंड डिसीजन 10% हो 50% हो 90% हो 100% हो कुछ भी होने दो इट विल नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर ठीक है फिफ्थ वाज लिंटनर्स मॉडल लिंटनर्स मॉडल इज नथिंग बट प्रैक्टिकल अप्रोच एंड लिंटनर सी बाकी सब ने ना बाकी जितने भी ऑथर्स या स्कॉलर्स है दे गिव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्राइस टुडे ध्यान से देखो Walter also gave the formula to calculate the price today. Gordon also gave the formula to calculate the price today. Similarly, Graham and Dodd and MM. सबने फॉर्मूला किसकी दी कि what should be the theoretical price of the company's share today. But Lintner ने क्या किया? Lintner gave what should be the company's expected dividend in the coming year. कंपनी को कितना डिविडेंड देना चाहिए प्रैक्टिकली फ्रॉम प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट ही इज टोटली आउट ऑफ द वॉर बिटवीन द टू टीम्स he is not of concern that ki dividend decision will affect market price or not nothing doing
होता है तो होता होगा, डिविडेंड डिसीजन से मार्केट प्राइस अफेक्ट नहीं होती है तो नहीं होता होगा, आई डोंट केयर. अकॉर्डिंग टू मी, practically the company should give the dividend as follows. D1 is nothing but D0 plus EPS into target payout ratio minus D0. The bracket was multiplied with adjustment factor. So this is what Lintner said. Ki expected dividend in the coming year should be calculated using this formula. अब इससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे इफेक्ट आती है कि नहीं आती है, आई डोंट केयर. अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, अकॉर्डिंग टू माई थियरी पेपर्स, this should be the expected dividend that you should give in the coming year. Understood? So बाकी सब are giving the formula to calculate the share price, but Linder is giving the formula to calculate the expected dividend. What should be the dividend in the coming year? Followed? Last but not the least, residual approach. Residual approach is very simple and straightforward. As per residual approach, it says कि whatever is the earnings of the company, कंपनी ने जितना भी कमाया है, first invest in the projects. First, use that earnings for investment in the projects that company is thinking of. कंपनी के पास जितने भी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आए हैं in different projects, first utilize that earnings in that investment. Means first use your earnings for your own growth. Are you following? Means business से कमाया हुआ पैसा business में ही लगाओ. This is what residual approach says. And if anything is left over, then distribute the dividend. So ideally, all the startup companies जितना भी अर्निंग्स करती है पहले दे reinvest in the business itself for growth, and if balance is there, then they take in the form of dividend or remuneration. Followed? Are you following? So this is residual approach. So your earnings should be first reinvested for the growth of business only. हाँ, उसके बाद कुछ बचता है, then you distribute the dividends in the form of surplus to the owner. But पहले पैसे बिजनेस में ही लगाओ. Any queries, students? So these are the different concepts that we quickly revised under dividend decision chapter. Adjustment factor is ideally an imaginary number. Imaginary number. But as far as my research is concerned, adjustment factor shows the aggressiveness or the readiness of financial manager. How much ready he is ready to accept this thing. A is the adjustment factor. How much aggressive he is ready to accept this. That is adjustment factor. But again, in your ICAI module as well, it is written that adjustment factor is nothing but an imaginary number. Okay? But according to me, according to my research, adjustment factor is showing the aggressiveness of financial manager to accept this thing. Now, what is this thing? You have to understand it in detail. So again, you have to watch the video on Lintner's model of my regular LVC. ठीक है? Because अगर ये मैं अभी समझाने गया तो 8:30 के पार चला जाएगा and we will not be able to solve any questions. ठीक है? But adjustment factor is nothing but readiness of financial manager to accept this thing. ठीक है? So this was all about the concepts of dividend decisions that you have already learned. Now, let's take some practical problem. We still have 20 minutes. Let's try to solve some practical problems.
So let me take some RTPs. So सितंबर 25 की आरटीपी मैं ले रहा हूं. Dividend decision is question number 8. Question number 8. Question 8. September 2025 आरटीपी. ठीक है. In the month of April of current financial year, shares of PQR Limited were sold for 150 per share. Means can I say the market price today P0 is nothing but 1570. The long term earnings growth is 8%. PQR paid dividend of 25 per share. Paid means this is the last dividend that company has paid. Calculate the rate of return an investor can expect to earn, assuming that dividends are expected to grow along with earnings at 8% per year in perpetuity. So, when is in this question, we have to use Gordon's model. So, as per Gordon's model, price of the share today is nothing but D1 upon KE minus G. Yes or no? Now, students, tell me after reading the first part, कि हमें इसमें से कौन सा वेरिएबल ढूंढना है. क्या हमें P0 फाइंड करना है, क्या हमें D1 फाइंड करना है, क्या हमें KE फाइंड करना है, क्या हमें G फाइंड करना है. बताओ what we need to find in part 1 of the question. Think and tell me. KE, correct. K, yes, K. So they have asked calculate rate of return an investor can expect. So whatever investor expects from the company, can I say it is return to investor but cost to the company? Yes or no? So that's why we have to find K. So मैं फॉर्मूला को कुछ ट्रांसपोजिशन करके K की फॉर्मूला बना सकता हूँ. K इज नथिंग बट D1 अपॉन P0 प्लस G. ऐसा लिख सकता हूं. आई हैव जस्ट ट्रांसपोजिशन द फॉर्मूला. फॉर्मूला को उल्टा फुल्टा किया. के ई माइनस जी को ऊपर लेके गया, P0 को नीचे लेके आया. सो कहने से के ई माइनस जी इज इक्वल टू D1 अपॉन P0. देन जी को के ई से अलग कर दिया, राइट हैंड साइड लेके आया. फॉलोड. सो के इज नथिंग बट D1 अपॉन P0 प्लस जी. सो कहना से माय D1 इज नथिंग बट D0 प्लस ग्रोथ. यस और नो? Last dividend paid, and if we add growth to last dividend paid, I will get D1. That is nothing but expected dividend in the next year. Divide by P0 plus G. Okay? So my last dividend paid in the question, it is given that it is 25. So 25 plus 8% will be my D1. My P0 is 1570 and my G is 8%. So tell me, what is my KE? Can I say 25 plus 8% is 27 divided by 1570 plus 0.08 into 100. 9.72%. ठीक है. 9.72%. Let's check the answer for part 1.
सॉरी, कहा गया क्वेश्चन? लेट मी क्लोज दिस. Yeah, 9.72%. Correct? So this is part one done. It is expected that PQR will earn about 10% on retained earnings and shall retain 60% of the earnings. So in second part, so now let's focus on part two. In second part, they said that my return on retained earnings, that is my return on investment, is 10%. And my retention ratio is how much? 60%. Means zero point 0.6. So I retain 60% of the earnings. I retain 60% of the earnings and 40% I distribute as dividend. Okay? In this case, state whether there would be any change in the growth rate or not. First of all, just focus till here. Tell me, when ROI is given and retention ratio is given, would there be any change in the growth rate? Yes or no? Yes. Can I say growth rate is nothing but ROE or ROI into retention ratio? So my growth rate would be 6% now. Tell me. Any doubts still here? Yes, it will change. So my growth rate will change. So this is done. Part one is done. Yes, growth rate will change and it will fall to 6%. And they have also asked whether there will be any change in cost of equity, KE. क्या KE में इसके वजह से change होगा? It definitely होगा. When growth change, can I say KE में भी effect आएगा? Because KE की formula में growth has some significance. Yes or no? We consider the growth rate in KE की formula. Are you following? So definitely आएगा. So what would be my revised KE? Can anyone try and solve? What would be my revised KE? कोई सॉल्व करके बता सकते हैं? हाँ सर, सिंपल है ना. ग्रोथ 6 हो गया तो सर 25 प्लस 6% लो एंड 1570 is the price and 0.06 6% is the growth. So sir, कितना आया? 25 plus 6%, 26.5 divided by 1570 plus 0.06. Sir, 7.69%. बोलो, is this correct? Is this correct? Tell me. Is this correct way of solving? It is not. It is not a correct way of solving. Can I say, my dividend amount will also change? Why? Because this original dividend amount, ये जो dividend था ना 25 रुपीज, वो हमें नहीं पता है कि उसका पे आउट रेशियो कितना था. हाँ, in the second case we know that the payout ratio is 40% of the earnings. But ये 25 का पे आउट रेशियो कितना था, that we don't know. Are you following this? Are you following? This 25 rupees का पे आउट रेशियो कितना था, that we don't know. This 25, can I say it would be something like this, EPS into payout ratio? कुछ ऐसा होगा, ऐसे कैलकुलेट हुआ होगा. Are you following this? Are you getting this? So 25 में EPS कितना था and उसका payout ratio कितना था, that we don't know. So we have to first find what is the EPS. Once we get this EPS,
we can apply with our 40% to find the revised dividend. एक बार हमने EPS ढूंढ लिया, so we can apply the revised payout ratio and then we can apply the formula of D1 upon P0 plus G. Following? So 25 का payout ratio कितना था? The 25 that dividend is given in the question. उसका payout ratio कितना है? That we don't know. For that, we need to first calculate the EPS. Are you following, students? So direct solve नहीं करना है. 7.68 Samruddhi, that is wrong. Because we don't know the original payout ratio. The revised payout ratio is 40%. But original क्या 40% ही था? That we don't know. That we need to calculate. So how to calculate the original? So now working note number 1. Calculation of original payout ratio and earnings per share. ठीक है? So now how to calculate? Can I say मेरे पास growth है, original growth है 8%? Yes or no? अब ध्यान से देना, अब ध्यान, this is a little tricky part on dividend decision. This is a little tricky sum on dividend decision. So original I have growth which is 8%. तो ये 8% कैसे आएगा? Can I say it is nothing but ROI into original retention ratio? Yes or no? Yes or no? ग्रोथ मेरा 8% कैसे आया होगा? आरओआई से आई वुड हैव मल्टीप्लाइड द ओरिजिनल रिटेंशन रेशियो. सो कैन आई से दिस 0.8 would be, can I say ROI is 10% and I don't know the original retention ratio. So can I say my X is nothing but 0.08 divided by 0.1. कितना आया? 0.8. Yes or no? So this is nothing but by original retention ratio. तो in other words मेरा dividend payout ratio कितना होगा? मेरा dividend payout ratio कितना होगा? Can I say it would have been 0.2, 20% of my EPS? Any doubt still here, students? We are trying to find the original dividend payout ratio. तो उसके लिए पहले ओरिजिनल रिटेंशन रेशियो ढूंढो. तो ओरिजिनल रिटेंशन रेशियो ढूंढने के लिए अप्लाई द फॉर्मूला फॉर ग्रोथ, फॉर ओरिजिनल ग्रोथ रेट. बोलो, एनी डाउट्स? फॉलोड? अच्छा, मेरा ओरिजिनल डिविडेंड पे आउट रेशियो आ गया. Original dividend payout ratio came to 0.2. Yes or no? And my amount of dividend is 25. So can I say my EPS would have been, can I say 25 is dividend, which is nothing but EPS into dividend payout ratio? Yes or no? ये dividend 25 कैसे आया होगा? EPS को dividend payout ratio से multiply किया होगा तब जाके आया होगा. So 25 is equal to, I don't know the EPS, but now I know the ratio of dividend payout. So can I say 25 divided by 0.2 is my earnings per share? Yes or no? So 25 divided by 0.2. So EPS comes to 125. And now on this EPS, you apply the revised dividend payout ratio. Followed? So directly हम dividend को 25 नहीं लिख सकते in second part of the question. First, calculate the EPS. Once EPS is calculated, apply the revised payout ratio on that EPS and then find D1. Are you following? So can I say my revised D0 would be 125. And now my retention ratio in part 2 comes to, part 2 में retention ratio कितना है? 60%. So payout ratio would have been 40%. Yes or no? So my D0 comes to 125 into 40%. Rupees 50.
So my revised dividend paid would have been rupees 50. So can I say my D1 would be 50 plus 6%, which comes to 50 plus 6%, which comes to rupees 53. Correct? And now I can calculate revised K, which is nothing but 53 divided by 1570 plus the revised growth rate. So 53 divided by 1570 plus 0.06, 9.38%. Followed. So this is my revised K. So it is not 7.36%. Why? Because जो डिविडेंड 25 रुपया था ना, उसका पे आउट रेशियो कितना था ओरिजिनली, दैट वी डोंट नो. फॉलोड. सो उसके लिए क्या किया हमने, उसके लिए फर्स्ट वी कैलकुलेटेड द ओरिजिनल रिटेंशन रेशियो कितना होगा बाय अप्लाइंग द ग्रोथ का फॉर्मूला. सो मुझे मिल गया कि तब पहले जब 25 रुपया डिविडेंड दिया है तब हमारा पे आउट रेशियो was 20% and retention was 80%. So if I had paid 25 rupees in the form of dividend and मेरा dividend payout ratio 20% है, तो कहने से मेरा EPS 125 होगा, उसका 20% करेंगे तो 25 दिया होगा dividend. So now my payout ratio of dividend changes from 20% to 40%. So can I say मेरा नया dividend that I would have paid would be 50 rupees. But still, this is my D0. I want expected dividend in the coming year by applying the revised growth rate. Are you following? So my D1 would have been 50 plus 6%. That comes to 53. And my revised KE would have been 9.38%. So this question was little tricky. So directly 25 लेके and revised growth apply नहीं करना है. पूरा उल्टा जाना है. First find the original retention ratio. Original retention ratio से original dividend payout ratio. Payout ratio से EPS कंपनी का कितना होगा, total earnings कितना होगा, वो find करो. Once the earnings is found, apply the revised dividend payout ratio on the earnings. Apply the revised growth rate on the dividend and then ultimately find KE. कोई डाउट है स्टूडेंट्स? So we were able to just solve one question on dividend decision, but I think this was the trickiest question of the entire chapter. Baki sab question, I guess it is simple only. You will be able to easily manage. And since you are on the final stage of your studies, आपको सब याद ही होगा. This is what I'm assuming. Followed? Any doubts, any questions in today's session? I hope today's session added some value in your lives. थोड़ा बहुत RTP page number, sir. This is RTP September 25 attempt. Page number is question 8 है. September 25 का question 8. Sir, in investment decision chapter, I have doubt regarding is opportunity cost allowed for tax deduction in income tax. Because when we add opportunity cost to the tax will also get, yes, it is allowed from income tax perspective because any opportunity savings, let's say by taking a new machine, we have saved on manual labor cost. तो कहना है से वो inflow होगा हमारा and we take net of tax savings. Are you following? Inflow hoga. So again, let me give you a small example. Let's say earlier हम मैन्युअली प्रोडक्शन करते थे, हमारा मैन्युअल लेबर बेस्ड वर्क था, एंड नाउ वी हैव मैकेनाइज्ड द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. सो कहना है मुझे लेबर कॉस्ट पहले भरना पड़ता था व्हेन देयर इज मैन्युअल जॉब, एंड लेट्स से इट कम्स टू 1 लाख.
ठीक है. सो क्या व्हेन आई एम यूजिंग द मशीन, मुझे अब ये लेबर कॉस्ट इनकर नहीं करना पड़ेगा. सो कहने से दिस इज सेविंग्स फॉर मी in the form of 1 lakh, and this savings, as far as financial management is concerned, it will be an inflow for me because I'm able to save 1 lakh. Followed. Accounting perspective say this is not an inflow or this is not an income, but from financial management perspective, savings is an inflow. In other words, जब लेबर कॉस्ट मैन्युअली में करता था तब मेरी टैक्स सेविंग्स होती थी, लेट्स सेट 30%. सो जब मेरा ये एक्सपेंस होता था 1 लाख का, बट सामने मुझे 30,000 का टैक्स सेविंग्स होता था, क्या अब ये टैक्स सेविंग्स होगा? नहीं होगा. सो कहने से दिस 30,000 बिकम्स एन आउटफ्लो फॉर मी. जैसे 1 लाख सेव्ड बिकम्स एन इनफ्लो, टैक्स पेमेंट बिकम्स एन आउटफ्लो. फॉलोइंग. जैसे लेबर कॉस्ट कॉस्ट अब नहीं होता है, दैट इज अ सेविंग्स, बट जो टैक्स में पहले भरता था वो अब नहीं भर रहा हूं. सॉरी, टैक्स में पहले जो बचा था अब वो बचत नहीं होगी. कैन आई से इट विल बी एन आउटफ्लो फॉर मी. सो वी टेक नेट ऑफ टैक्स सेविंग्स. फॉलोड. सो टैक्स की इफेक्ट देनी ही है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो या चाहे सेविंग्स इन कॉस्ट हो. फॉलोड. सो पहले टैक्स की बचत होती थी, अब नहीं होगी, सो इट इज एन आउटफ्लो. पहले कॉस्ट बच पहले कॉस्ट इनकर होता था, अब नहीं हो रहा है, सो इट इज अ इनफ्लो. सो दिस इज हाउ यू शुड interpret, or this is how you should decide whether it is an inflow or outflow. Okay, so with this we end today's session, and I hope you found it good and you were able to get your queries solved. So with this we end today's session. Thank you all for your time and patience. Tech team, we are ending.